अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ वजीहुल हसन। आज मेरा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा ये फ्लावर से ड्राइव्ड वर्ड है। फ्लावर जिसे हम बोलते हैं, फ्लोरा बेसिकली किसी इकोसिस्टम में जो प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, उनको हम फ्लोरा बोलते हैं। अगर हम एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एंटर हो, हम देखेंगे कि वहाँ पे टॉल ट्रीज हैं, ग्रासेस हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, हर्बेशियस जो नर्म जिनका तना होता है, हर्बेशियस प्लांट्स भी वहाँ पे हैं। तो वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमें नज़र आएंगी, वो बेसिकली फ्लोरा कहलाएगा। A variety of plant species in an ecosystem known as flora. For example, in a tropical forest, a variety of tall trees, small grasses, and small plants. For example, in our tropical forest, there is a variety of tall trees, small grasses, and plants. अब हम देखेंगे व्हाट इज फाना। जब हमारी प्लैनेट अर्थ पे फ्लोरा इंक्रीज होगा, यानी कि प्लांट स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी, तो फाना भी एग्जिस्ट करेगा। फाना ऑल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं। कोई भी एनिमल जो हमें बेसिकली नज़र आता है, वो फाना जो है वो फ्लोरा के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो फाना में वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज होती हैं जो कि फ्लोरा के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। कोई भी एनिमल है, फॉर एग्जांपल वो कोई एलिफेंट की अगर बात करें तो वो फ्लोरा के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसे अपनी फूड के लिए ग्रासेस को और डिफरेंट प्लांट्स की जो लीव्स हैं उसे चाहिए होंगे खाने के लिए। तो फ्लोरा इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर फाना। अगर हमारी ज़मीन पर लाइट ना पहुँचे तो सारे का सारा फ्लोरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फाना भी ख़त्म हो जाएगा। फाना, a variety of animal species in an ecosystem for example, different species of insects in tropical forest. हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं बाकायदा तौर पर नज़र आती हैं, तो वो उसे हम फाना कहेंगे।